Assalamu alaikum students. Today I will tell you how to solve question number 5 of class 10th of exercise 3.2. This question is so much important according to board paper. These questions of this exercise are involved in your short questions portion. So be focused on this video and follow my channel, subscribe my channel and click on the bell icon if you are new on my channel, and then click on the bell icon so whenever my next video will be uploaded, the notification will be arrived at your mobile or laptop screen. So now we will start our question, and this question is so much important. Question number 5 is if V proportional R cube and V is equal to 5 when R is equal to 3, find R when V is equal to 625. In this question, we have a condition V proportional R cube. So we will start our solution by this given condition. As V proportional R cube, convert this sign of proportional into equality and K. As you know, proportional जब भी convert होता है तो equal और K आता है आपके पास. K is a constant value. V equals to K R cube as it is. This is our equation 1. Now we will put the values of V and R in this equation 1. V is equal to 5 and R is equal to 3. By putting V is equal to 5 and R is equal to 3 in equation 1, we get in place of V you have to put 5, K as it is. In place of R put R is की value क्या है जी 3. ये जो cube है आपके पास as it is. 3 cube means 27. How can you find this value 27? It means 3 multiply with itself 3 times. 3 खुद से 3 times multiply होगा. 3 multiply 3 multiply 3, 3 3 is a 9 and 9 3 is a 27 होता है. 5 as it is. 27, when we shift this 27 to other side of equality, it converted into division. So value of K is 5 by 27. This is the value of K. Now we will put this value of K in equation 1 in place of K. So by putting K is equal to 5 by 27 in equation 1, we get V equals to 5 by 27 R cube. V as it is. K की जगह पे आपने 5 by 27 लिख दिया and R cube. Name this equation as equation 2. Clear? Now further question इस बेस पे, इस equation की बेस पे सॉल्व होगा. यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. V की वैल्यू, R की वैल्यू फाइंड पुट करके हमने K की वैल्यू फाइंड की. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R बाय पुटिंग V इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2. Now by putting V is equal to 625 in equation 2, we get V equals to K R cube. In place of V put 625, value of K 5 by 27 R cube as it is. Shift this 27 to other side of equality, it converted into multiplication, and when we shift this 5 to other side of equality, it converted into division equals to R cube as it is. 625 multiply 27 by 5 as it is. Cancel 625 with 5, 5 1s are 5, 5 125 is 625. 125 multiply with 27. So 125 multiply 27 equals to R cube as it is. 125 is the cube of 5. 5 को 3 times multiply करें. 5 multiply 5 multiply 5, it becomes 125, and 27 is the cube of 3. So 3 multiply 3 multiply 3, it becomes 27. So we will write in power form, cube form, because we have R power 3. So write these values in cube form. 5 power 3 multiply 3 power 3 equals to R power 3 means 5 का cube multiply 3 का cube equals to R cube. Write this power cube only once. 5 multiply 3 whole power cube equals to R की power 3 यानी R cube. Now we will टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी 1/3 हमने बोथ साइड्स पे ले लिया क्योंकि हम 3 को कैंसिल करना चाह रहे हैं. और 3 को कैंसिल हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें 1/3 से, यानी क्यूब रूट से. दिस इज आवर क्यूब रूट. 3 इज क्यूब एंड 1/3 इज क्यूब रूट. सो वी विल टेक ऑन बोथ साइड्स 1/3 मीन्स क्यूब रूट. 5 multiply 3 होल पावर 3 1/3 यानी क्यूब रूट. R power 3 whole 1/3. 3 3 से कैंसिल हो गया. 5 3s are 15 equals to R. Value of R is 15. Now we will start question number 6. This question is also very important. Question number 6 is W varies directly as U cube and W equals to 81 when U equals to 3. Find W when U equals to 5. Similarly, we have a condition
at the start of this question if W varies directly as U cube. Start this solution. W varies directly, so W proportional U cube. इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन फॉर्म में. In place of proportion, put the sign of equality and k. W equals to k U cube. This is our equation 1. Now we will find the value of k by putting the value of W and U in this equation 1. तो फाइंड से पहले तक आपने ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है. वैल्यू ऑफ W इज़ 81 एंड वैल्यू ऑफ U इज़ 3. सो हम क्या करेंगे जी, फाइंड से पहले वैल्यूज़ को पुट कर देंगे U और W की, ताकि हम K फाइंड कर सकें. बाय पुटिंग W इक्वल्स टू 81, U इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. इन दिस इक्वेशन वी गेट इन प्लेस ऑफ W पुट 81, इन प्लेस ऑफ U पुट 3. 3 का क्यूब एज यू नो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ 3 टाइम्स. सो 3 का क्यूब क्या होता है जी 27. 81 एज इट इज़. शिफ्ट दिस 27 टू अदर साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन. 27 कैंसिल विद 81. 27 1s are 27, 27 3s are 81, so value of k is 3. Now we will put this value of k is equal to 3 in equation 1 in place of k. So by putting k is equal to 3 in equation 1, W equals to 3 U cube. आपके पास k की जगह पे वैल्यू 3 पुट कर दी, तो W इक्वल टू 3 U cube आ गया आपके पास इसी वैल्यू इसी इक्वेशन में. दिस इज योर इक्वेशन 2. Now we will put the value of U and find the value of W as we have given in our question. Put U is equal to 5 and find W. So we will put in equation 2 U is equal to 5 and then we can easily find the value of W. By putting U is equal to 5 in equation 2, we get W equals to 3 as it is. In place of U put 5 cube as it is. Cube means 5 multiply with itself 3 times. 5 multiply 5 multiply 5. So your answer is 125. कैलकुलेटर पे कर लें, वैसे मल्टीप्लाई कर लें. 5 multiply 5 2 टाइम्स करें तो मल्टीप्लाई 5 को तो 25 बनता है, एंड थर्ड टाइम जब 5 से मल्टीप्लाई करें 25 5 ज़ा 125. So 3 as it is and 125 multiply 3, answer is 375. This is your final answer and this is the answer of W. Hope so आपको इजीली ये क्वेश्चंस दोनों समझ आ गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग माय चैनल.